So we had started our discussions on the hamstrings. Takes origin from one of the bones, takes insertion on one of the bones of the leg. Origin is from the ischial tuberosity. Supplied by tibial part of sciatic nerve. Then flexors of the knee and extensors of the hip. But here we are talking about the adductor magnus insertion. Adductor magnus gets inserted on the linea aspera and ends at adductor tubercle. On the linea aspera is the insertion of its adductor component. On the adductor tubercle is the insertion of its hamstring component. And just below that arises tibial collateral ligament. Tibial collateral ligament, which gets inserted on the tibia. So now question is, if adductor magnus is getting inserted here and not getting inserted on one of the bones of the leg, why it is called as a hamstring? ये आपको एग्जाम में पूछते हैं. So then you have to say that this tibial collateral ligament is considered as a divorced tendon. Divorce, अपना लाइफ अपने बॉडी में ही डाइवोर्स का केस है. इधर हम लोग एंटी डाइवोर्स इतना बात करते हैं, अपने बॉडी में ही डाइवोर्स हो रहा है. किसका डाइवोर्स हो गया? Adductor longus and tibial collateral ligament. So tibial collateral ligament actually basically originally adductor magnus was like this, but then it got inserted here, and this is its separated part. And therefore, through the tibial collateral ligament, it is inserted on one of the bones of the leg, which is tibia. Therefore, it is considered as hamstring, but not a true hamstring. True hamstring nahi hai. Okay? Now, what about the insertion of the other hamstrings? This is the medial side, this is the lateral side. On the medial side, behind the tibia here, is a groove for semimembranosus. Semimembranosus. So semimembranosus gets inserted here. Okay? So semimembranosus gets inserted here, and also from its insertion, it sends fibers which go like this behind, get attached to the femur, or the capsule of the knee joint, covers the capsule of the knee joint from behind. This is called as oblique popliteal ligament. Oblique popliteal ligament. Oblique popliteal ligament covers the capsule of the knee joint from behind. It is an extension of the tendon of semimembranosus, which gets inserted on a groove behind the medial condyle of tibia. ये हम पीछे से देख रहे हैं ना. आगे से हम टिबिया को जब देखेंगे, आगे से टिबिया को जब देखेंगे, तो सपोज ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है, ये शिन है. ओके, मीडियल साइड ऑफ टिबिया हमारी बॉडी में अगर आप देखोगे, मीडियल साइड ऑफ टिबिया, इस पे एक भी मसल इंसर्टेड नहीं होता, डायरेक्टली बोन फील होता है. लैटरल साइड पे मसल है. चलो एवरीबॉडी फील. मीडियल साइड ऑफ टिबिया सीधा बोन है, और उस पे लात वगैरह लगा रहे हैं ना फुटबॉल खेलते समय, इधर डायरेक्ट बोन. ऐसा हमारे बॉडी में रेयरली कुछ जगह पे है, और यहाँ पे लिटरली यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है, मसल ही नहीं है. भगवान को मालूम था कि इन लोगों का भी बोन ग्राफ्ट ये वो कुछ लगेगा, तो सर्जन्स के लिए फैसिलिटी करके रखा है ऑलरेडी, डायरेक्टली बोन उठाने. और जिनके पाप ज्यादा है, उनको फुटबॉल खेलते समय वहाँ पे लात मार मार के उनके पाप नष्ट हो जाते हैं उससे. But there are three tendons
which you see at the uppermost part of the medial surface. यहाँ पे insertions, इसके लिए वो tendons हमको feel नहीं होते, and that हमारे सुमित सर का नाम क्या है शॉर्ट फॉर्म? हाँ, SGS, हाँ. So अरे सुमित सर का क्या, मेरा YJB है तो उनका क्या है? SGS, sartorius gracilis semitendinosus. Sartorius gracilis semitendinosus. सुमित गणपत सोनाम. Sartorius gracilis and semitendinosus. Okay. तो semitendinosus का इंसर्शन भी आपको मैंने बताया. अभी now on the side of tibia is fibula. On the side of tibia is fibula, and on the head of the fibula is inserted the biceps femoris. That insertion is C-shaped. That insertion is C-shaped. And inside the C is the fibular collateral ligament of the knee joint. Apex of the fibula, on the apex of the fibula, you see the insertion of biceps femoris. सॉरी हमें थोड़ा सा so these are the 4 insertions of the hamstrings. Insertion of adductor magnus is on adductor tubercle, but through the tibial collateral ligament it gets inserted on tibia. Insertion of semimembranosus is on the groove on the medial condyle of the tibia behind on the posterior surface, and then oblique popliteal ligament. Insertion of semitendinosus is along with sartorius and gracilis, and insertion of biceps femoris is on the yes exactly. So this is how the 3 hamstrings they get inserted. Now going to the next topic, which is the popliteal fossa, which the hamstrings are kind of forming the boundary. So this is semimembranosus, this is semitendinosus. So that means this is my medial side. Okay? This is the biceps femoris. That means this is the lateral side. And here are the gastrocnemius muscles. Okay, medial head of gastrocnemius and lateral head of gastrocnemius. And on the lateral side is on one more muscle called as plantaris. So these are the boundaries of popliteal fossa. So we say superomedially, superolaterally, infерomedially, inferolaterally. Okay? Now, roof. Roof, skin, superficial fascia.
और अच्छे मार्क चाहिए तो सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग स्मॉल सेफेनस वेन, स्मॉल सेफेनस वेन। तो ग्रेट सेफेनस है, स्मॉल सेफेनस है। देखो अगर ये फुट है, ये हॉलक्स है और ये बाकी के डिजिट्स हैं, यहाँ पे एक डॉर्सल वीनस आर्च होता है, वीनस आर्च, उसके मीडियल एंड से ग्रेट सेफेनस वेन चालू होती है और उसके लैटरल एंड से स्मॉल सेफेनस वेन चालू होती है। सो ये मेरा लेफ्ट साइड का फुट है। ग्रेट सेफेनस ऐसे आएगी, स्मॉल सेफेनस पीछे जाएगी। So that small saphenous you see behind in the roof. Also there is posterior cutaneous nerve of the leg. There is sural communicating nerve. Then posterior branch of the medial cutaneous nerve of the thighs. Some cutaneous nerves are there. Okay, posterior cutaneous nerve of thigh is there. Posterior cutaneous nerve of thigh. Sural communicating nerve and posterior branch of the medial cutaneous nerve of the thigh. Some cutaneous nerves. Deep fascia. Now what forms the floor? What forms the floor I have already kind of discussed with you. When you look behind this is the posterior view, this is the femur, this is the tibia. femur आपने ऑलरेडी सीखा है। यहाँ पे एक सरफेस होता है, क्या कौन सा सरफेस है? popliteal surface. So that is one. Suppose this is the medial side, this is the lateral side. From the lateral side takes one muscle origin. क्या नाम है उसका? लैटरल साइड पे ग्रूव होती है, वो ग्रूव से एक मसल ओरिजिन लेता है, क्या नाम है उसका? पॉप्लिटियस। फीमर का लोअर पार्ट सीखा ना आपने, ग्रूव फॉर पॉप्लिटियस नहीं, मीडियल साइड पे एडक्टर ट्यूबरकल, लैटरल साइड पे ग्रूव फॉर पॉप्लिटियस, जहां से पॉप्लिटियस ओरिजिन लेता है। दिस पॉप्लिटियस मसल gets inserted here. यहाँ पे था सेमी मेम्ब्रेनोसिस, राइट? और ये क्या है? Oblique popliteal ligament. So the floor of the popliteal fossa above downwards is formed by three structures. One, popliteal surface of femur. Two, oblique popliteal ligament and capsule of knee joint. And three, fascia covering popliteus muscle. Above downwards, the floor of the popliteal fossa is formed by one, popliteal surface of femur. Two, oblique popliteal, and three, fascia covering the popliteus. So boundaries हो गया, roof हो गया, floor हो गया, ओके? आपका नाम क्या है? बाप रे, आप खड़े रहो। बाउंड्रीज कैसे बोलेंगे आप? हाउ डू यू टॉक अबाउट द बाउंड्रीज? पीछे देखने के नहीं रहे, खड़े रहने का। हाउ डू यू टॉक अबाउट द बाउंड्रीज? superior medially, semi-membranosus, semi-membranosus, superior laterally, biceps, inferior medially, medial head of castor, inferior lateral, lateris and lateral.
Now the contents. Again, suppose this is the medial side and this is the lateral side. Contents, कोई भी anatomy में content है तो हमारे दोस्त है arteries, veins, nerves, lymph nodes, fat. So popliteal pad of fat. यहाँ पे artery रहेगी popliteal artery, vein रहेगी popliteal vein. Nerve, sciatic nerve के दो branches, tibial है, common peroneal. लाइंस आपको ड्रॉ करना है मीडियल टू लैटरल 1 2 एंड 3 आर्टरी वेन साइटिक नर्व यहाँ पे डिवाइड हो रही है टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व. This is the characteristic thing in the popliteal fossa. In the upper one-third, from medial to lateral is artery, vein, nerve. In lower one-third, it is nerve, vein, artery. Nerve is tibial vein, no? Medial to lateral. Nerve, vein, artery. And in middle one-third, from deep to superficial is again artery, vein and nerve. ऊपर artery medial है, नीचे vein nerve medial है. Medial to lateral is artery, vein and tibial nerve. In the middle part, anterior to posterior, deep to superficial is artery is the deepest. Artery, vein and nerve. And lower part medial to lateral is nerve, vein and artery. यही उसका contents है. उसके अलावा there will be common peroneal nerve. Then popliteal lymph nodes. Then popliteal pad of fat. है कि नहीं चेक करो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ. Significance of this fossa. Significance. Huh? It is used to measure the pulse in the lower limb. Pulse in the lower limb. Another significance to measure the blood pressure of the lower limb also. अब बोलेंगे सर ये क्यों जरूरी है? There are conditions like coaptation of aorta. जो aorta ऐसे निकला upper limb को subclavian दे दिया और उसके बाद वो ब्लॉक हो गया यहाँ पे. तो लोअर लिम्ब का पल्स विल बी फीबल, लोअर लिम्ब का ब्लड प्रेशर विल बी लोअर. सो सच टाइम्स यू हैव टू टेक ब्लड प्रेशर ऑफ द लोअर लिम्ब आल्सो. दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन टेक. फ्यूमरल तो इधर है, कहाँ टाई करेंगे? जो बीपी बांधने के लिए आप जो टाई करते हो इधर किधर टाई करें? तो यही एक लोकेशन है जहाँ पे आप ब्लड प्रेशर ले सकते हो लोअर लिम्ब का. क्यों लेना है? Because there are conditions where pulse is feeble in the lower limb. There are conditions when blood pressure is lower in the lower limb. Clear? And also popliteal artery वहाँ पे कभी-कभी घिसते लोग knee joint को sometimes it may get thrombosed. May get. Not happens in everybody. जिसका नसीब बेकार है क्या करेगा? मतलब सबके बॉडी में पोप्लिटियल आर्टरी है, वो नी जॉइंट के पीछे है, वो थोड़ा सा घिसता है, बट देन सम पीपल इट जस्ट गेट्स थ्रोम्बोस्ड. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द पोप्लिटियल फोसा एंड hamstrings. Thank you.